नमस्कार दोस्तों। जो यूपीएससी ने ईपीएफओ के लिए ईओ और एओ का पेपर किया था, एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 5 सितंबर 2021 को। उस वाले पेपर का हम एक एक करके डिटेल्ड सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की तरह इसमें भी 120 सवाल थे और हमारी टीम मिलकर एक एक करके हर एक सवाल का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम उसका सॉल्यूशन और उसका एक्सप्लेनेशन हम आपसे डिस्कस करेंगे। अगर इस वाले पेपर की हम एक ओवरऑल समरी की बात करें, सो इसका कट ऑफ वाज 75 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120। इसका मतलब क्या है कि जिसने 120 में से 75 सवाल करेक्ट किए, नेगेटिव मार्किंग के नंबर काटने के बाद, ही और शी गोट अ कॉल फॉर इंटरव्यू इन 2021। क्योंकि द नंबर ऑफ 75 आउट ऑफ 120 इज अ सिग्निफिकेंटली हायर नंबर, इसका मतलब है कि द डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर वाज इजियर। एंड ऑफ कोर्स ऐसा था भी। जैसे अकाउंटिंग के सवाल थे, सब 11-12 लेवल के थे। पिछली बार कुछ सीए लेवल के भी क्वेश्चन थे उसमें, ठीक है। द डिफिकल्टी लेवल और बाकी टॉपिक्स का भी, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर वाज लोअर इन कंपैरिजन टू 2017 पेपर। 2017 में जिसने 120 में से 58 किए, उसको इंटर कॉल आ गया। लेकिन 2021 में यही नंबर इंक्रीज टू 75। ऑफ कोर्स द डिफिकल्टी लेवल कैन कीप वेरिंग। जब हम लोग 2023 में पेपर देंगे, ऐसा हो सकता है कि इसका डिफिकल्टी लेवल ऊपर चला जाए या फिर और भी कम हो जाए। दीज थिंग्स कीप हैपनिंग इन यूपीएससी आरटी एग्जाम्स। अगर हम बात करें कि किस टॉपिक से कितने सवाल आए, तो एक बार हम उस चीज को भी हम एक बार देख लेते हैं। दिस इज वेटेज ऑफ टॉपिक्स इन 2021 वाला पेपर, जिसमें अकाउंटिंग से 10 सवाल आए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से 15, जनरल इंग्लिश से 20, करंट अफेयर से 15, जनरल साइंस से 15 विच इज अ वेरी गुड नंबर, पॉलिटी से सिर्फ 5 सवाल आए, कंप्यूटर से 10, इंडियन इकोनॉमी से ओनली 5, एप्टीट्यूड और रीजनिंग से 15, और लेबर लॉज, आईआर और सोशल सिक्योरिटी से 10 सवाल आए। अगर अब इन्हीं वेटेज ऑफ टॉपिक्स को हम कंपेयर करें 2017 के मुकाबले में, सो देर इज आल्सो लॉट ऑफ वेरिएशन। जैसे कि 2017 में अकाउंटिंग के 15 सवाल थे जो कि 21 में कम होके 10 रह गए। इस तरह कंप्यूटर नॉलेज के पहले 5 थे जो कि अब बढ़ के 10 हो गए। करंट अफेयर के पहले 10 से अब बढ़ के 15 हो गए। इंग्लिश के यूजुअली कंसिस्टेंटली सारे आरटी एग्जाम में 20 ही सवाल होते हैं, बट बाकी में कुछ वेरिएशन होता रहता है, एज यू कैन सी। और आप खुद भी 17 और 21 का पेपर आप यहां से कंपेयर कर सकते हो। गाइस, बिफोर वी स्टार्ट विद वन बाय वन, दो तीन चीजें। द डिफिकल्टी लेवल कीप्स वेरिंग, द वेटेज ऑफ टॉपिक्स आल्सो कीप्स वेरिंग। हमें कोशिश करना है कि हम अपना पूरा 100% सिलेबस करें, न कि हम कुछ ऐसा नोशन दिमाग में बनाएं कि इस वाले टॉपिक से ज्यादा सवाल आता है, इसे कम आता है। हमें पूरा मेहनत करके अपना सिलेबस पूरा ही करना होगा। एंड दैट इज हाउ वी कैन फील सेफ एंड कॉन्फिडेंट कि वी कैन सिक्योर अ सीट इन 2023। गाइस, विद दैट नोट शुरू करते हैं। Let us start with questions on numerical ability and reasoning. How many times does the digit 3 appear between 1 to 100 such that the number where 3 appears is not divisible by 3? Okay, guys, let us see the numbers where 3 appears between 1 to 100. These numbers are, first let us see where digit 3 appears at the unit place. These numbers are 3, 13, 23 and so on up to 93. These are 10 numbers. Now let us see the numbers where 3 appears, but at the tens place. These numbers are 30, 31, 32, and so on up to 39. Again, these are 10 numbers. Between both of them, 33 is common. 33 will come 2 times. How many such numbers are there? 10 plus 10 to 20 minus 1, because 33 is there. 19 such numbers are there. Out of these 19, which are divisible by 3? Which are divisible by 3 are 3, 30, 33, 36, 39, 63 and 93. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 numbers out of these 19 which are divisible by 3. Then how many will be not divisible by 3? They will be 19 minus 7, 12, and each of these 12 have 3 one time only. Therefore, the correct answer is B.
Which one of the following is the remainder when 74 raised to power 100 is divided by 9? So 74 raised to power 100 divided by 9 can also be rewritten as 72 plus 2 raised to power 100 and divide by 9. 9 into 8, 72. Therefore, it can be written as 2 raised to power 100 divided by 9. It can be written as 2 raised to power 3, 33 into 2 divided by 9, which can be written as 8 raised to power 33 into 2 divided by 9, which can be written as minus 1 raised to power 33 into 2 divided by 9, which can be written as minus 2 divided by 9, which is nothing but a remainder of 7. Correct answer is D. Next one. Which one of the following is the arithmetic mean of under root 3 minus under root 2 and its reciprocal? So guys, what is reciprocal of root 3 minus root 2? It will be root 3 minus root 2. So let us multiply it by root 3 plus root 2 and root 3 plus root 2. So it will come out to be root 3 plus root 2. So let us find the arithmetic mean of this and this. So arithmetic mean of this and this will be this plus root 3 plus root 2 divided by 2, because arithmetic mean this cancels out. So 2 root 3 divided by 2, it will be root 3, and correct answer will be A. Next one. Suppose x and y are two positive numbers such that when x is reduced by 2 and y is increased by 2, the ratio is 2 by 1. And when x is increased by 2 and y is reduced by 2, then the ratio is 3 by 1. So we can just simplify both of them. The first one is x minus 2 is equal to 2y plus 4. And the second one will be x plus 2 is equal to 3y minus 6. So maybe what you can do is deduct 2 from 1. So what you will get, minus 2 minus 4 is equal to minus y and plus 10. So this gives us y is equal to 14. So y is 14, just put it maybe in any of these formulas. This will give us x to be 34. So x minus y will be 34 minus 14, which will be A, which is 20. Next one. If n greater than n be a composite natural number whose square root is not integer, consider the following statement. So guys, what does this mean? Then n is a composite number and its square root is not an integer. It means this number is greater than 1, but this is not a perfect square. And of course, this should be a composite number. So we can take any example. So maybe we can take n is equal to 20. So I take n is equal to 20. Then let us look at the statement. You can take n is equal to 20. You can take n is equal to 22. You can take 28. Only condition is this should not be a perfect square. Okay. N has a factor which is greater than 1. But less than square root of n. So square root of n will be approximately somewhere between 4 to 5. So can we find a factor which is greater than 1? Can we find a factor of 20 which is greater than 1 but less than square root of square root of 20? Yes. 2 is one such factor. Therefore, statement 1 is correct. N has a factor which is greater than square root of n but less than n. So can we find a factor of 20 which is greater than square root? Square root will be between 4 to 5 but less than n. So less than 20. So one such factor is 5. And therefore, statement 2 can also be true. Therefore, both 1 and 2 can be true. Next one. What is decimal equivalent of this binary number? So guys, how do we calculate this? 1 0 1 1 1 0. And so the last number 2 raised to power 0 into 0, 2 raised to power 1 into 1, 2 raised to power 2 into 1, 2 raised to power 3 into 1, 2 raised to power 4 into 0, and 2 raised to power 5 into 1. So this will be 0, this will be 2, this will be 4, this will be 8, this will be 0, and this will be 32. This total will be 46, and thus correct answer will be A.
Next one, which one of the following is average of all prime numbers between 21 to 55? So which are prime numbers between 21 to 55? So these are 23, then we have 29, then we have 31, then we have 37, then 41, then 43, then 47, and then 53. So we have to find their average. So we'll sum them up. This will come out to be 308. And how many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Divided by 8. It comes out to be 38. Correct answer is C. Next one. If ratio of speed of A and B is 5/6 and B allows A start of 70 meters in 1.2 kilometer race, who will win the race? So guys, we have got two guys which are A and B. Because B is allowing a start of 70 meters, so A will run only 1200 minus 70, 1130 meters. On the other hand, B has to run 1200 meters. What is the ratio of their speed? 5 and 6. So let me assume that the speed of A is 5 meter per second and B is 6 meter per second. So let us see who will win. So in how much time B will reach the final point? 1200 by 6, 200 seconds. Let us see when B is finishing the race in 200 seconds, where A will be. A speed is 5. So 200 into 5, 1000 meters. So at that point of time, when B is finishing the race, A will reach only 1000 meters. So therefore, and how much A has to cover? 1130. Therefore, B will beat A by 130 meters, and correct answer is C. Next one, M is 60 years old. Okay, so M is 60. R is 5 years younger to M. So R will be 60 minus 5, 55. R is 4 years senior to V. So V will be 55 minus 4, 51. The youngest brother of V is B, and he is 6 years junior to B. So B will be 51 minus 6, 45. And we have to find the difference between M and B. M is 60, B is 45. Their difference will be 15 years. Correct answer is B. Next one. First 6 letters are written in the opposite order. Okay, so we write this way. First 6 letters in the opposite order. So A, B, C, D, E, and F. These are 6 letters. Okay, then we write next 6 letters also in opposite order. So G, H, I, J, K, and L. Then what do we do, guys? Then we write next 6 also in the opposite order. Okay, so M, N, O, P, Q, R. Okay, then next 6 also in the opposite order. So R, S, T, U, V, W, X, again 6 letters. Then it will be Y and Z. At the end, Y and Z are interchanged. So we can write Z and Y in place of Y and Z. Now what we have to find? Fourth letter to right of 13th letter. So which is 13th letter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. And fourth right to it, 1, 2, 3, 4. Therefore, the answer is A. Next one. If A varies as B, then which of the following statements are correct? So A varies as B means A is directly proportional to B. Okay, let us look at the first statement. The first statement is nth root of A square by, so A square by B, nth root is directly proportional to 2 nth root of A raised to power 4, B raised to power 2, 2 nth root. Okay, if we simplify this portion, which one? If we simplify this one, this can be written as A 4 raised to power 2n, B 2 raised to power 2n, which is nothing but A square into B raised to power 1 by n, which is same as the term in the left hand side. Therefore, first is always true. So even if this information is not given, still A will be always true. The A will be always true. Therefore, statement 1 is always true. Okay, let us look at now second one. The second one says A by B square varies as B. So we know that A is directly proportional to B.
So A by B will be directly proportional to 1, or A by B square will be directly proportional to 1 by B, which is nothing but A by B square is inversely proportional to B, which is given in our statement. Therefore, statement 2 is also true. Therefore, both 1 and 2 are correct. Next one. The average age of husband and wife was 23 years when they were married 5 years back. So if today's husband age is H and wife is W, so what was husband age 5 years back? H minus 5. What was wife age 5 years back? W minus 5. And both of them has an average of 23. So 23 into 2, this will be equal to 46. So H plus 2 is equal to H plus wife is equal to 56. Now, if average age of husband, wife and their child now is 20 years, it means husband plus wife plus child is 20 years. So 20 into 3, because average is 20, is equal to 60. So from these two statements, 1 and 2, we can make out that child is nothing but 4 years old. Therefore, correct answer is D. Next one. If W1 and W2 are weights of two solid iron balls of radii 1 by 2 and 1 by 3 meters, which of the following is equal to W1 raised is to W2, considering that their density is same, weight is directly proportional to volume. So volume of 1 and volume of 2 will give us W1 and W2. So what is volume of first one? Volume will be, because it's a sphere, 4 by 3 pi r square. So what is r? 1 by 2, 4 by 3 pi r cube, 1 by 3 r cube. It will be 4 by 3 pi and 1 by 3 r, 1 by 3 cube. It will be nothing but 1 by 2 cube and 1 by 3 cube. So it will be 1 by 8 divided by 1 by 27, which is nothing but 27 by 8. Therefore, correct answer is B. Next one. 40% of students in a class are from India, 50% are girls. If 25% of Indian students are girls, then what percentage of non-Indian are boys? So guys, it's a question of cross tabulation. So that is how we put the data, and we write that. So these are Indian, these are non-Indian, and these are our boys, and these are our girls. Okay, so what is given? It is given that 40% are from India, so it will be 40. So remaining will be 60. Okay, then 50% are girls, 50%, boys will be remaining 50. Considering that there are only two categories, no transgender. Okay, then what is given? It is given that 50% of Indian students are girls. How many are Indian? 40%. Sorry, 25% of Indian students are girls. So how many are Indian? 40%. And what is 25% of 40? 10. So this will be 10. If this is 10, we can fill up everything. This will be 40. This will be 30. And this will be 20. What is asked? What percentage of non-Indian are boys? So we have to find percentage of boys and non-Indian. How many are non-Indian? Non-Indian are 60%. How many of them are boys? Boys are 20%. So 20 by 60 is 1 by 3 into 100 to find the percentage, 33.33. Correct answer is A. Next one. Average weight of 100 students in a class is 46 kg. Okay. So total weight of 100 will be, total of 100 students will be 46 into 100, which is 4600. Average weight of boys and girls is 50 kg and 40 kg respectively. What is difference between number of boys and number of girls? So let me assume that my number of boys is maybe X. So how many girls will be there? Because total is 100, 100 minus X. This X boys have got an average of 50. So to find the weight of all 50 boys, multiply by 50. This has a weight of, average weight of 40. So multiply 40. And this total boys and girls should match. So 50X plus 100 minus X into 40 is equal to 4600. It will give your X to be 60. And now X boys are 60. How many girls? Girls will be 100 minus 60. So girls will be 40. So boys 60, girls 40. We have to find the difference between boys and girls. 60 minus 40, 20. Correct answer is C. Next one. A hollow
closed cube of side 10 centimeter weighing 200 gram is made. This cube is placed in water with a horizontal face. How many centimeters of its height will sink in water if density of water is 1 gram uh, per centimeter cube? So guys, what is given that this is water, okay, and in this water we have got let me explain it nicely. This is the water and there is a cube which is there in this water, okay. This cube has a dimension of 10 centimeter and the weight of this cube is 200 grams. Side is 10 centimeter each. It's a cube. We have to find what? We have to find that what is this height? That how many centimeters of cube is merged, submerged in the water. So guys, we have to know the Archimedes principle to understand this question. What Archimedes principle says is that this upward buoyant force is given by weight of the weight of the body. This water which is displaced. So guys, if my so what is volume of this portion? Volume of this portion of cube will be 10 into 10 area of base into height, which is x. So this will be the volume, and what is the density? Density is 1 gram per centimeter cube. I multiply this by 1. This is equal to 200 grams. This is equal to 200 grams, and therefore 100x is equal to 200. X is equal to 2. Therefore, correct answer is C. It's a question which is given in numerical ability, but this is nothing but this is part of what? This is part of general science actually. Okay, guys, that's all. Thank you. Where did Gandhiji put in his first major public appearance after returning from South Africa in 1915? So question is very simple from history. In 1916, Gandhiji was invited to speak at the laying of foundation stone of BHU. So correct option to this question is Banaras Hindu University. Who among the following is the author of Gandhi as Mahatma? Again, a very simple question. So author of Gandhi as Mahatma is Shahid Amin. So correct option is option B. Who among the following was the president of the Indian National Congress at the time of independence of India? Very straightforward question. So J.B. Kriplani was the president of INC at the time of independence of India. Right? So correct option is D. 34th question. During 1931, under whose leadership did a strong Kisan Sabha movement develop in the Gaya district of Bihar? So it was under the leadership of Sahajanand. Strong Kisan Sabha movement was developed in the Gaya district of Bihar. So correct option is B. Who produced the Pirpur report 1938? So this Pirpur report is also known by the name of Day of Deliverance. So actually in 1939, the Muslim League tried to highlight the grievances of the Muslims and Muslim groups in the Indian states run by Congress government, right? So in lieu of that, the Pirpur report and Sharif report was there. Okay, so and the answer to this question is Muslim League. Okay. Okay, which one of the following facts pertaining to the National Green Tribunal is not correct? So NGT set up in 2010, this is correct, and purpose is also to ensure effectiveness and expeditious disposal of cases relating to environmental protection, right? And it is guided by the principles of natural justice. However, NGT is not obliged to follow the judicial process as laid down in the civil procedure code. Okay, so correct option is C.
Who among the following was the founder of Swatantrata Party? So this Swatantrata Party was formed in the year 1959, and the founding members were C. Rajgopalachari, Minu Masani, and G. Ranga. Right? So correct option to this question is A. Okay, a very straightforward question from Industrial Disputes Act of 1947, wherein they are asking the definitions. Okay, so closure, between closure and lockout, the major difference between the two is that closure refers to the permanent closing down of the place, and lockout is temporary closing down of the workplace. Workman is any person employed in any industry to do skilled, unskilled manual work, and strike is cessation of the work by the employees. So accordingly, correct option is A to this question. Who is an adolescent as per the Factories Act 1948? Again, the definition question from Factories Act, and it is very simple. As per Factories Act, adolescent is who has completed 15 years of age but is less than 18 years of age, right? So correct option is A to this question. What is a controlled industry? So under quite few labor laws, the definition of controlled industry is given, and as per those laws, the controlled industry refers to any industry the control of which by the union has been declared by the Central Act to be expedient in the public interest. Okay, so straightforward, option A is correct. What is the minimum number of members required for registration of a trade union? So as per Trade Union Act of 1926, seven minimum number of members required for registration of trade union. So option C is correct. Which one of the following does Nirguna Bhakti refers to? So if we are talking about Nirguna Bhakti, Nirguna refers to formless God. Okay, so abstract form of God. So correct option to this question is D. Okay. What did Ain-e-Akbari seek to promote within the frontiers of Mughal state? So if we look at the options, social disharmony, no, this cannot be the answer. It's a quite negative statement, social disharmony, right? Cessation of provincial units from central rule, this is not the answer. Social harmony with the support of a strong ruling class, this is the correct answer. So C is the correct option, right? Gandhiji's salt march to Dandi was started from which one of the following places? Again, a very simple question from salt march. So this march was started from Sabarmati Ashram to Dandi, right? So correct option to this question is B. Who among the following was not a member of the socialist group in the Congress party? So we have to identify who is not the member of the socialist group of Congress party. So Congress party that was founded in the year 1934, right? So I can give you the list of some of the prominent leaders associated with this group: Jai Prakash Narayan, Ram Manohar Lohia, Acharya Narendra Deva, and these were the founding members. And some other few other leaders have supported the socialist group, like Achyut Patwardhan and Aruna Asaf Ali, right? So if we look at the options, Rajendra Prasad is not associated with this group. So correct option to this question is B. Who among the following was not recommended in Macaulay's 1835 Minute on Education? So looking at the option D, teaching of both Western and Oriental texts at higher level of education, this was not included. This was not recommended as per the Macaulay's 1835 Minute on Education. So correct option to this question is D. Which one of the following states will be directly connected with Assam by the proposed bridge between Dhubri and Phulbari over river Brahmaputra? So question is very simple.
So it is one of the under construction bridge, right? So Dhubri in Assam and Phulwari in Meghalaya. The bridge is connecting these 2 points, and it is a stretch of almost 19 kilometers. Okay, so correct option to this question is Meghalaya. Which of the following statements are correct with respect to Ramsar Convention? So if we look at the options, yes, India is a signatory to the Ramsar Convention, and this convention was signed by India in 1982, right? And yes, Ramsar Convention is about wetland conservations. And because the question belongs to 2021, so number of sites which got recognition under Ramsar Convention up till 2021 in India is 49 only. And if we talk about in present context, it is the number has rose up to 75. Okay, so the correct option is only first and second statement is correct. So accordingly, option D is correct. So statement 3 is incorrect. Okay. Next, which one of the following is not an objective under Pradhan Mantri Krishi Sinchay Yojana, PMKSY? So if we look at the options, we can easily look out the answer. So because it is talking about Krishi Sinchay, right? So irrigation and water is talked about. So B, C and D, they are talking about irrigation and water. Only option A, which is not referring or which is not matching as per the objectives of this scheme is the option A, providing subsidies to use fertilizers, high yielding varieties and pesticides. So option A is correct to this question. Okay, so this is not among the objective of PMKSY. Okay, next question is, in which one of the following places was Asia's first export processing zone, EPZ, set up in 1965? So answer is Kandla. So this was set up in 1965 in Kandla. Correct option is B. Okay, next question is, which one of the following statements about trial balance is correct? So one of the very straightforward question, which is from accounting. Okay, so what is trial balance? Trial balance contains the various ledger balances of a particular entity on a particular date. So this statement is correct while others are incorrect. Wages paid for installation of machinery is debited to which one of the following accounts? So whenever we pay wages on installation of the machinery, it's a one-time expense. So it has to be capitalized in the cost of the machinery itself, right? So therefore, this amount has to be debited to machinery account. So correct option is B. When are current liabilities payable? So current liabilities are usually payable within a year, right? So the time span which usually belongs to payment of current liabilities, that is a year. Okay, so correct option to this question is A. Is the total of debit and credit side of trial balance the same? No. Okay, every time we prepare trial balance, there can be some errors. Okay, error of posting can be there, error of omission can be there, error of totaling, or there can be n number of errors which may belong to trial balance. Okay, so correct option to this question is no. There are sometimes good reasons why the debit and credit side differs in a trial balance. So correct option is A. Which one of the following is the first book in which the transactions of a business unit are recorded? So very straight question again from accounts, and it refers to the first book in which the transactions of business units are recorded. So that is called journal. Book of original entry is also the name which is assigned to journal, right? So correct option to this question is D. What is the maximum amount of gratuity payable to the employees under the Payment of Gratuity Act 1972? That is, the limit is now rupees 20 lakhs. So correct option is D.
Maximum number of hours in a week that an adult worker is allowed to work for. So as per the provisions of Factories Act, so 9 hours a day and 48 hours a week is a number of hours, maximum number of hours an adult worker is allowed to work. So correct option is D. What is the maximum period in which the appropriate government shall review and revise the minimum rates of wages? So again, a very straightforward question from Minimum Wages Act. So this period is 5 years, right? So correct option is D. Okay, so in this question, they have asked which of the following basic operations of converting raw input data into useful information is not performed by computers. So as we all know, this is a very basic question. Inputting, storing, outputting, every single thing is done by the computer. The only option which is not performed by all computers is switching. Switching is the process of forwarding data packets from one port to another till the time they reach their destination. And it is the process to keep safeguarding the quality of the information that is traveling as well. In the next question, they have asked which of the following memories is extremely fast and act as a high-speed buffer between CPU and main memory. The correct answer is cache memory. If you have studied memory hierarchy of a computer system, this will be a very simple question to answer. What does cache memory actually does? It temporarily stores blocks of information which can be used at a split second by the computer. The next question is asking about not a web browser. As we all know, Internet Explorer is a web browser, Firefox, Google Chrome, all of them are. But Fedora is actually an open source platform for hardware, clouds, and software development tools. In the next question, they have asked a very basic question. What is represented by 1 GB of information, whether it's KB, MB, TB, or petabytes? Guys, this is a very commonly asked question. They'll ask you questions like this regarding 1 GB, MB, TB. You have to study the basic hierarchy when it comes to computer. So 1024 KBs is equivalent to 1 MB. 1024 MB is equivalent to 1 GB. This is equivalent to 1 terabyte, and this is equal to zettabytes. So the correct answer is 1024 MB. You have to study how the memory calculation is done. Please look into it. Please study it. It's a very simple topic, but has a lot of value. Now, as we go on to the biology portion or the science portion of this particular this particular exam, you'll see that now what students actually think that the science portion usually comes from 6th to 10th. Yes, most of the questions will be from 6th to 10th, but that does not mean that you do not have to study the basic concepts given in 11th and 12th booklets of NCERT, and that comprises your physics, chemistry, biology, environmental sciences. Anything can be asked. All right. Now, if you look at this particular question, it asks about female reproductive organs in humans, and the keyword is not. Ovaries, oviducts, and cervix are all human reproductive organs. Are all human reproductive organs of females. Stamen is actually the male reproductive part in plants, and it produces pollen grains. All right. The next question talks about the amphibians
of plant kingdom? Now, this is a very interesting question. Reason being, this is the question you will find in your 11th class biology NCRTs. Reason being, that is the time when you are introduced to different plants and animal kingdoms and the classification and hierarchy that goes with it. Right? Now, amphibians of plant kingdom. This particular title is given to a class known as bryophytes. Bryophytes are those plants which live in soil, but they live in soil, but require water for reproduction. And out of these, Riccia, Funaria, and Mercantia are all examples of bryophytes. The only species which is mentioned in the question that is not part of bryophytes is Spirogyra, and that is your answer. Okay, next question talks about which one of the following is not a consequence of deforestation. Now, deforestation is a issue which has been prevailing across the globe because of cutting of the forest to create more land for, say, human settlement or industrialization. All of these things have created an issue of deforestation. Now, in the question, they have asked not a consequence. Biodiversity has decreased. Absolutely. Soil erosion has increased. Decreased rainfall is there. So these three are the consequences. It has not led to increment in groundwater table. So the correct answer is A. Now, this question is again a question from your 11th standard NCRT booklets. This talks about which of the following chromosomes has a mismatched pair in a normal human male. If you guys have studied a little bit of genetics or little bit of basic reproductive biology, you'll know this, that the humans are made up of X and Y chromosomes. These are your sexual chromosomes. In females, you have two X chromosomes, while in males, you have an X and Y chromosome. So in a normal human male, mismatched pair of X chromosome is found. So the correct answer is C. Now, the next question talks about vaccine. What does vaccine actually mean? Where do you actually derive this term vaccine from? The vaccine, the term was derived actually from cowpox virus, which was actually vaccinia. So the correct answer is C. Now, we get to the physics and biology mixed portion of the question of the paper. So in this, they have asked regarding the image formation in the two eyes of the humans. Now, what actually happened in the human eyes? Each eye is separated with a bit of bridge. This area between your eyes is known as the bridge. So each eye has a focus of a completely different image. You have a slightly different image. These images pass on to your brain, and your brain merges them together to form an entire view. So the correct answer is D. The correct answer is D. Now, in the next question, they have asked regarding the wavelength of microwave ranges. So they have asked regarding where the microwave ranges lie. Now, microwave in your electromagnetic spectrum lies between 1 mm and 1 meter, which is between infrared and radio waves. The correct answer is A.
Now, next question is the size of hydrogen atom. This is again your 11th, 12th topic, and this is given directly in your NCERT. The correct answer is 10 raised to power minus 10 meter. Now, when you come to question number 49, which is which of the following statements regarding force is correct? It talks about positive forces as well as negative forces which are implying on a object. Now, positive forces are those forces which are forcing it in a particular way, and negative forces are those forces which are putting against. Like, for example, if you are pushing a block on a surface, then what you are doing is putting a positive force which is trying to move the object. But the friction from the surface which is stopping the movement of that object is the negative force. All right. So the correct answer is D. Negative forces implies attractive nature. They stop the objects from moving. Next is a basic definition question. Basic definition question: when an dielectric material is kept in an external electric field, which of the following phenomena may be realized? The correct answer is polarization. Dielectric materials get polarized, which means they minimize the effect of the external field. Okay, now we get to the chemistry portion of this exam. Which one of the following substances, when added to water, will not change the pH? Will not change the pH. The correct answer is NaCl or common salt. Common salt. It does not changes the pH. Next question is, which will not create a scattering of beam of light? Scattering of beam of light. So the scattering of the beam of light requires the formation of a colloidal solution. Colloidal solution. Milk, chalk powder and ink, they all form colloidal solution, but your copper sulfate are crystals which dissolve in the water. They do not form any crystallization, which will not lead to the formation of a colloidal solution. So the correct answer is A. Okay. Now, guys, they have asked regarding the reduction of metallic zinc. This question comes from reactivity series, which was created by doing displacement reactions. And this list talks about the decreasing activity of metal ions in a chemical reaction. Your Cu is copper, H is hydrogen, Ag is silver, and this is aluminium. In this list, on the top, you have potassium, sodium, calcium. At the bottom, you have silver and gold. So the correct answer of this question is aluminium. Okay. In this question, they have asked you regarding who discovered proton. Now, this topic actually comes up in your 9th or 10th NCERT booklets, but there you just have the basic division of atom into electrons, protons, and neutrons. But the exact discovery, the experiment with which this particular person actually discovered proton comes in your 11th, 12th booklets of NCERT when you start studying quantum chemistry. The correct answer is Ernest Rutherford, and he did it in his thin gold sheet experiment, in which he actually saw the movement of bombardment from the positive center. Okay. The next question is a basic molarity, mole fraction question.
It talks about how many moles of CH3OH can be obtained from 2 moles of CO and 2 moles of hydrogen. If you see the question, if you see this particular reaction, it talks about 2 moles of hydrogen as it is. So if you put 2 moles of CO, then you'll get only 1. You're getting only 1. Out of those 2 moles of CO, which has been provided in the question, the reaction will utilize 1 mole of CO to combine with 2 moles of hydrogen and will give you only 1 mole of CH3OH. Okay. Now we get to another topic, another question in which it talks about language translators. Now, if you look at this thing, your assembler, interpreter, and compiler are all language translators. What do they actually do? Assembler has the functionality of converting assembly language into machine language. Interpreter converts source language into executable code, and compiler compiles or converts source language into executable code, with a major difference is compiler will convert the entire code in one go. Your linker is responsible for linking the code together. It is responsible for linking the code together. So the correct answer is B. Next question talks about device drivers of output devices. This is a very basic question. It interprets computer output into user understandable form. This is a very basic thing. Okay. The next question talks about the registers. Now, out of these given registers, only program counter can be the correct answer, as program counter contains 12 bits which hold address to the next instructions. Okay. Next talks about audio file formats. Audio file formats are very basic questions, like you'll get them anywhere. Like you'll find a lot of file formats and you have a lot of lists which you can go through. This is a very common, very basic question. The basic audio file formats include your PCMs, waves, MP3s, AACs, Vorbis, etc. The correct answer, which is not an audio file format, is SWF. The next question talks about your 1-bit information storage. The correct answer is flip-flop. Flip-flop is a single bit. It's a single bit that contains only 1 or 0. It just contains one character, one state. It has one state, 0 or 1. Okay, the question says which one of the following is the mandate of committee on estimates? तो committee on estimates क्या है? ये एक finance committee है parliament की, right? 3 committees है parliaments की जो finance committees होती हैं. एक है आपकी public account committee, एक है आपकी estimate committee और तीसरी है आपकी कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, राइट? तो ऑब्वियसली एस्टिमेट कमेटी का काम होता है कि जो गवर्नमेंट के जो बजट्स हैं उनको एक तरीके से एस्टिमेट करना, उनकी एफिशिएंसी चेक करना. और ऑप्शन ए में अगर आप देखोगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इट रिपोर्ट्स ऑन व्हाट इकोनॉमिक्स इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसीज और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी अंडरलाइंग द एस्टिमेट्स में भी इफेक्टिव. तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए. Next is according to economic survey 2020-21, which one of the following will be India's real GDP growth
इन द ईयर 2021 एंड 2022। तो बात सिंपल सीखनी है कि ये काफी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपसे चाहता है, राइट? इतना याद नहीं रहता है, बट सिंस एग्जाम में ये सब चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए आप इनको भी ध्यान रखिए कि रियल जीडीपी ग्रोथ जो थी वो थी 11%, राइट? पहले तो जीडीपी रियल और नॉमिनल होती है। अगर जीडीपी रियल है तो वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड है और कांस्टेंट प्राइस पर निकाली जा रही है, और नॉमिनल है तो वो करंट प्राइस पर निकाली जा रही है, राइट? तो इन्फ्लेशन अनएडजस्टेड है। तो करंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विच इज 11%। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्रोनिम फॉर द वर्ड नीति इन नीति आयोग? तो नीति आयोग का एक्रोनिम क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन के 2015 के बाद नीति आयोग का गठन किया गया, और काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका सही होना ही चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द नमामि गंगे प्रोजेक्ट? सो नमामि गंगे प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, जो कि 2014 से चल रहा है सरकार का, और इसके साइलेंट फीचर्स पूछे गए हैं, और ये आपको पता होना चाहिए दैट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्योंकि आप ये भी इस तरीके से सोच सकते हैं कि उड़ीसा जो है वो गंगा जो है वो उड़ीसा की तरफ नहीं जाती है, और दैट इज वाई इसको आप सीधा टिक करके आ जाइए, एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ जोनल रेलवेज एंड देयर हेडक्वार्टर इज नॉट करेक्टली मैच? तो यहाँ पे काफी ही रोड ब्लॉकर टाइप का क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, बिकॉज ये वो इन्फॉर्मेशन है जो शायद काफी कम लोगों को पता हो, राइट? तो ये क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी रहे हैं तो दैट इज ओके, राइट? इसका करेक्ट आंसर वैसे ए है, क्योंकि जो सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर्स है वो मुंबई में है, नागपुर में नहीं, और इसका ए आप टिक करके आ जाइएगा। नेक्स्ट इज ट्राई सर्विस कंटिजेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन इंडियाज रिपब्लिक परेड इन 2021? तो 2021 रिपब्लिक परेड में कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया? यह काफी इंपॉर्टेंट खबर होती है करंट अफेयर्स के हिसाब से, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विच इज बांग्लादेश। पर आप अगर देखेंगे तो करंट अफेयर्स भी जो आ रहे हैं दे आर वेरी फैक्चुअल इन नेचर, राइट? हम आगे बढ़ते हैं। Which one of the following does not figure in the list of languages in the 8th schedule of Constitution of India? तो भोटी लैंग्वेज जो है इसको इंक्लूड नहीं किया गया, इन तीनों को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के बाद इंक्लूड कर लिया गया। तो ये लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? ये लैंग्वेज बोली जाती है आपकी हिमालयन रीजन्स में, जैसे आपका लद्दाख, और यहां तक अरुणाचल प्रदेश में भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट इज एज अ रूटीन एक्सरसाइज ऑपरेशन गर्म हवा इन सर्द हवा कंडक्टेड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज, दो फैक्चुअल, बट ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसमें बीएसएफ इसका करेक्ट आंसर है, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिप्रेजेंट द मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट इन इंडिया? तो मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल क्या था? एज द नेम सजेस्ट कि किसी भी प्रकार का एजिटेशन हो उसमें हम रेडिकलिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी एग्रेसिव हो रहे हैं, और इसका करेक्ट आंसर है कृष्ण कुमार मित्रा, जो कि एक जर्नलिस्ट थे, एंड ही इज वेरी फेमस फॉर हिज संजीवनी जर्नल, और आप इसमें सी को टिक करके आ सकते हैं। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिचुएशन इन राउटवेरी एरिया इज करेक्ट? तो राउटवेरी क्या था? एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, राइट? इसमें क्या होता था? गवर्नमेंट इज डायरेक्टली टेकिंग टैक्सेस फ्रॉम द कल्टिवेटर्स, राइट? डायरेक्टली टेकिंग टैक्सेस। ये लॉर्ड मुनरो ने इसको शुरू किया था मद्रास में, who was the governor of Madras at that point of time, right? तो अगर आप ऑप्शंस में जाएंगे तो अगर आप ऑप्शन ए देखेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड पास इनटू द हैंड्स ऑफ मनी लेंडर। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कल्टीवेटर जो थे वो जो टैक्स दे रहे थे उनको वो कैश में देना था, इन काइंड में वो नहीं दे सकते थे। हैंस तो मनी लेंडर लॉबी एक आ गई, आपकी रिच पीजेंट लॉबी आ गई, जो मनी लैंड कर रहे हैं, तो उन्हीं के पास सारा लैंड गिरवी रख के टैक्स दिया जाता था, राइट? तो अगर आप ऑप्शन ए देखेंगे तो आपको अब सही लगने लगेगा कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड पास इनटू द हैंड ऑफ मनी लेंडर्स, मर्चेंट्स एंड रिच पीजेंट हु यूजुअली यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ टेनेंट। तो ऑप्शन ए में आप टिक करके आ जाइए। इन द ईयर 1911 हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे? तो ये एनएम जोशी ने बनाई थी, राइट? इसका काम था जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है उनकी स्टडी करना, इवन आज भी ये है, और जो रोड है इसके सामने उसको हम एनएम जोशी रोड के नाम से ही जानते हैं, और करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। Next is who among the following was not part of the group of no changers in the Congress party? Again keywords, दो टाइप के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब खत्म हुआ या फिर एब्रप्टली खत्म हुआ, तो दो टाइप के कांग्रेस में सेपरेशंस आ गए, which is no changers, ग्रुप्स बन गए, which is no changers and the pro changers, right? तो प्रो चेंजर्स जो थे they are led by CR दास,
या फिर आपके मोतीलाल नेहरू हो गए, राइट। तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन डी में मोतीलाल नेहरू दे दिया है और आप इसको टिक करके आ जाओगे। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में आया था, टू एडवाइज आवर कंट्री कि हम कैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, कैसे हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से सेपरेट हो। और इसका नाम क्रिप्स कमीशन भी कहते हैं वो, क्योंकि इसके हेड थे। तो बी तो नहीं होगा, ए और सी भी इसके मेंबर थे, डी इसके मेंबर नहीं थे, इसलिए ऑप्शन डी को आप टिक करके आ जाइएगा। Who among the following is the first player in the history of Test cricket to take 200 wickets against the left-hand batsman? Again, ये बात ऐसी है कि अगर आपने क्रिकेट में रुचि रखते हैं या फिर आप एनकाउंटर कर रहे हैं इस इंफॉर्मेशन, तो दैट इज वेरी रेयर, राइट। अगेन इट इज अ टाइप ऑफ रोड ब्लॉकर, ठीक है। वेल जिसको पता है वेल एंड गुड, और इन क्वेश्चंस के लिए हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, राइट, दिस इज द पॉइंट। सो इसका करेक्ट आंसर है रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन डी। Who among the following speakers of Lok Sabha formally disassociated from the political party after his election as the speaker? तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल बात है जो लोगों को पता होनी चाहिए कि नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वो एकमात्र ऐसे स्पीकर हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से खुद को हटकर फॉर्मली रिजाइन लेकर स्पीकर बन गए। एंड ही इज द ओनली स्पीकर कहना चाहिए जिन्होंने ऐसा भी किया और ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 UNESCO has been observing February 21 as International Mother Language Day since 2000. The idea to celebrate this day was the initiative of which of the following nations? Well, किसी भी डे की डेट क्या है, उसकी थीम क्या है सेलिब्रेट करने की, या फिर किस कंट्री ने उसको ओरिजिन कराया, ये सब काफी इंपॉर्टेंट खबर है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और इसीलिए ये आपको पता होना चाहिए। और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट इज Dr. Ngozi Okonjo-Iweala was recently selected as the first woman Director General of WTO. She hails from which of the following countries? Well, very recent news और काफी बड़ी न्यूज भी थी और नाइजीरिया से थी है, और ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। The Kaladan Multimodal Transit Transport Project will connect India with which one of the following countries? तो ये ईस्टर्न जो भी इंडिया का पोस्ट है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न है वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा फॉर द कार्गो सर्विसेज टू दी म्यांमार। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन बी। Okay, the question says which one of the following is the name of the scheme introduced as a well-targeted system of service delivery to LPG customers? तो क्या है, LPG customers हैं जिन्हें well-targeted service delivery मिली है। तो ये मार्केटिंग स्कीम थी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की, 2015 या 16 में आई थी, और ये सहज स्कीम इसका करेक्ट आंसर है विच इज ऑप्शन ए। So question is, under Sukanya Samriddhi Yojana, what is the maximum amount that can be deposited during a financial year? सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना एक गवर्नमेंट की स्कीम है जो किस लिए बनाई गई है? गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट के लिए बनाई गई है, अंडर द इनिशिएटिव कॉल्ड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस इनिशिएटिव के अंडर बनाई गई है। तो जो भी गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स हैं या गार्डियन हैं वो इस स्कीम के अंडर उनका सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जो गर्ल की एज होनी चाहिए वो मस्ट बी बिलो देन 10 ईयर्स, तो 10 साल से कम होनी चाहिए। एक गर्ल चाइल्ड का सिर्फ एक ही अकाउंट अलाउड है। और जो कितना डिपॉजिट, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिटेड ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। तो जो रेंज है ना मिनिमम और मैक्सिमम की, जो एक फाइनेंशियल ईयर में उसके पेरेंट्स या गार्डियन डिपॉजिट करा सकते हैं, दैट इज ₹250 to 1.5 lakh. So minimum is 250 and the maximum is 1.5 lakh. So उसने क्या पूछा है? मैक्सिमम अमाउंट पूछा है जो डिपॉजिट करा सकते हैं ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1.5 lakh. Let's move to the next question. What is the minimum and maximum age at which a subscriber can join the अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना एक गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है। ये कब आई थी? अटल पेंशन योजना 2015 में आई थी। 2015 में लॉन्च हुई थी बाय श्री नरेंद्र मोदी जी।
किसके द्वारा लॉन्च करी गई थी? श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च करी गई थी। ठीक है, ये किसको टारगेट करती है? कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को टारगेट करती है, कि जो लोग अब अर्न नहीं कर रहे हैं उनको पेंशन प्रोवाइड करती है, मनी इनकम प्रोवाइड करती है अटल पेंशन योजना। ठीक है, तो इसके लिए जो मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? सो मिनिमम एज होनी चाहिए 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज होनी चाहिए 40 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। मिनिमम इज 18 and maximum is 40. So option B is correct. Let's move to the next question. Which one of the following denotes gross profit? ठीक है, gross profit हम कैसे find out करते हैं? जब हम sales में से cost of goods sold को minus कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? ग्रोस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब सेल्स क्या होती है? जो भी हमारा इनकम, जो भी हमारी मनी या इनकम जनरेट हो रही है सेल करके, तो वो सेल्स में आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स जो भी डायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड है गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, जो भी मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल लग रहा है, तो वो सब किस में आएगा? जैसे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो वो किस में आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो जब हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी मैन्युफैक्चर में खर्चा आ रहा है, जो भी डायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड है, उसको माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? ग्रोस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा हमारा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम इससे? ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द अंडरलाइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट that support no anticipation of profits but provision for all possible losses? ऐसा कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट है जिसमें हम क्या करते हैं? हम सारे पॉसिबल लॉसेस को तो एंटिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन लॉसेस को तो एंटिसिपेट कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट को नहीं कर रहे। ऐसा कौन सा है? दैट इज कंजर्वेटिज्म, जिसमें हम कंजर्व रहते हैं। मतलब इसके अकॉर्डिंग जितने भी एक्सपेंसेस है या लाइबिलिटीज है, वो तो जितनी जल्दी हो सके हम उनको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, जितनी जल्दी, क्योंकि जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है। जितने भी पॉसिबल आउटकम है वो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। तो जितने भी एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज हैं इस अकाउंटिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जितनी जल्दी हो सके हमें रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। और जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो रिकॉग्नाइज तब भी करने चाहिए जब हम एश्योर्ड हैं कि ये रिसीव होंगे। ये कंसेप्ट ये कहता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करना चाहिए और प्रॉफिट को तभी ही रिकॉग्नाइज करना चाहिए जब हमारे पास एश्योरेंस है कि ये प्रॉफिट हमें रिसीव, इतना इनकम, इतना अमाउंट हमें रिसीव होगा। ठीक है, तो बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। मैचिंग अकाउंटिंग कंसेप्ट कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं एक अकाउंटिंग पीरियड में वो मैच करने चाहिए उस अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यू के साथ। क्या कह रहा है? एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रेवेन्यू, ये कह रहा है मैचिंग कंसेप्ट कह रहा है। नेक्स्ट इज मटेरियलिटी। मटेरियलिटी कहता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल ट्रांजैक्शंस हैं या फिर आइटम्स हैं वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। जो भी इन्फ्लुएंस कर सकती है इन्वेस्टर के डिसीजन को वो प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। ठीक है, मटेरियल आइटम या फिर इंपॉर्टेंट आइटम भी कह सकते हैं हम। ठीक है, कंसिस्टेंसी क्या कह रहा है कि अगर हम एक मेथड को एक ईयर में यूज कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट ईयर में भी उसी मेथड को ही यूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी, ताकि अगर हम इस साल की बैलेंस शीट या इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच करते हैं तो इजीली कंपेयर कर पाए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following accounting concept is applied by an entity when events such as new competitor entering in the market and rift between production and marketing department are not disclosed in the books of account? अभी क्या कह रहा है? सबसे पहले देखते हैं कि 4 ऑप्शन गिवन है हमको। ठीक है, फर्स्ट इज मैचिंग। मैचिंग क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि जब एक्सपेंडिचर जो है ना रेवेन्यू के इक्वल है, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंडिचर जो है वो मैच करना चाहिए रेवेन्यू के साथ, ये कहता है मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है,
सेकेंड इज मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट क्या कहता है? मनी मेजरमेंट कहता है सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी जो मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस करी जा सकती हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक सच कि कोई इवेंट हुआ कि व्हेन इवेंट सच एज न्यू कंपटीटर ने एंटर किया मार्केट में, रिफ्ट आया बिटवीन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, तो ये डिस्क्लोज नहीं किया क्योंकि ये मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको डिस्क्लोज नहीं किया। तो ये किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हुआ? दैट इज मनी मेजरमेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मनी मेजरमेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात करी गई है क्योंकि जो बात क्वेश्चन में करी गई है उस इवेंट को मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, और मनी मेजरमेंट के अकाउंटिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी जो मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस करी जा सकती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following concern prepare receipt and payment account? जो receipt and payment account है is prepared by non-trading concern। जो receipt and payment account is prepared by non-trading concern। non-trading concern क्या होता है? जो प्रॉफिट कंसर्न के लिए नहीं होते, इसमें कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी इंक्लूड नहीं होती है। ये वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो सोशल नीड को पूरा करती है। कौन सी गुड्स और सर्विसेज? जो सोशल नीड्स को पूरा करती हैं। जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है ना, ये ना नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के लिए कैश अकाउंट की तरह काम करता है। इसकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर बना सकते हैं, और इनकम और एक्सपेंडिचर से हम ये देख सकते हैं कि कितना सरप्लस हो रहा है और कितना डेफिशिएट्स हो रहा है हमारी फर्म में, हमारी कंपनी में। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? दैट इज नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following statement is correct about income and expenditure account? हम देखते हैं कि ना अकाउंटिंग के, सबको पता है कि अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल्स होते हैं। ठीक है, 3 अकाउंट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज रियल अकाउंट, सेकंड इज पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। तो 3 अकाउंट होते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, क्या क्या रूल है? अब रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल है, लिखते हैं हम, डेबिट what comes in credit what goes out। तो रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट what comes in, क्रेडिट what goes out। ठीक है, और पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? दैट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो ये 3 मेजर गोल्डन रूल्स हैं। क्या है ये? गोल्डन रूल्स हैं अकाउंटिंग के। इसको कितने 3 अकाउंट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज रियल, सेकंड इज पर्सनल, थर्ड इज नॉमिनल। तो रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो इनकम और एक्सपेंडिचर वाली बात कौन से अकाउंट में की गई है? नॉमिनल अकाउंट में की गई है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो और हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? और ये बात किसमें की गई है? नॉमिनल अकाउंट में की गई है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट? कौन है इसके ऑथर? दैट इज दलाई लामा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, दलाई लामा। Let's move to the next question. Which day has been declared by the government of India to be celebrated every year as पराक्रम दिवस? कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस को ऑब्जर्व किया गया था 23 जनवरी को। कब किया गया था? 23 जनवरी को किया गया था।
ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। किस लिए? जो भी उन्होंने उनके सेक्रीफाइसेस को, उनके एफर्ट्स को जो उन्होंने कंट्री के लिए किए हैं, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। कब ये पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था, कब अनाउंस किया गया था? ये किया गया था 23 जनवरी 2021 को ये पहली बार अनाउंस हुआ था। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कब मनाया जाता है ये? 23 जनवरी को। किस लिए मनाया जाता है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a copy of the famous 16th century artwork Salvator Mundi, which was reportedly stolen, has recently been recovered by the police in Italy. The painting is attributed to whom among the following? हाँ, ऐसी एक न्यूज आई थी, तो ठीक है, तो ये जो पेंटिंग है वो इज एट्रीब्यूट टू whom? दैट इज लियोनार्डो दा विंकी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज the global firepower okay, next is the global firepower index 2021, a military strength ranking placed India at which rank? तो ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में क्या होता है? इसमें ना रैंकिंग दी जाती है मिलिट्री पावर्स को, मिलिट्री फोर्सेस को रैंकिंग दी जाती है। जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज हैं उनकी सभी मिलिट्री फोर्सेस को रैंक दी जाती है। इसमें 50 प्लस जो क्या कहते हैं पैरामीटर्स को कंसीडर किया जाता है। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं वो? दैट इज वर्क फोर्स, बजट के अकॉर्डिंग, इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, जियोग्राफी के अकॉर्डिंग, ऐसे कम से कम 50 प्लस पैरामीटर्स हैं जिनको इंक्लूड करके मिलिट्री फोर्सेस को रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि 2021 में इंडिया की रैंकिंग क्या थी? तो इंडिया की रैंकिंग क्या थी? 4th। और जो 2022 में भी इंडिया की रैंकिंग क्या है? 4th ही है। तो फर्स्ट पे कौन है? यूएस, सेकंड पे है रशिया, थर्ड पे है चाइना एंड फोर्थ पे है इंडिया। अंडरस्टूड? फर्स्ट पे है यूएस, सेकंड पे है रशिया, थर्ड पे है चाइना एंड फोर्थ पे है इंडिया। तो अब इसने कौन सी रैंकिंग पूछी थी? 2021 की। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4th। ठीक है, the global firepower index 2021, a military strength ranking placed India at which rank? That is 4th. Let's move to the next question. Naomi Osaka won the women's single title of the Australian Open tennis tournament 2021. Who among the following was defeated by her in the finals? तो नयोमी ओसाका ने किसको डिफीट किया है? दैट इज जेनिफर ब्राडी। किसको डिफीट किया है? जेनिफर ब्राडी को डिफीट किया है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अंदर। सो ऑप्शन Okay, so the first question that we have is, each of the following sentence in this sentence has a blank space and 4 words or a group of words, and given after the sentence selects the word or group of words that you consider are most appropriate. So moving forward, the first question that we have is, it's time you went out and dash your own living, afforded, earned, gained, won. तो इस सेंटेंस से हमको ये समझ आ रहा है कि someone is saying to someone to go out and to earn. The meaning of your own living is obviously that you have to earn for yourself, then only you can survive in the world, right? So someone is telling someone to go out and start earning. So the option that we have here is afforded, earned, gained and won. सो अगर आप ऑप्शन बी अर्नड को देखोगे तो अर्नड का मतलब होता है कमाना या फिर टू अर्न। और हम जैसे इस पर्टिकुलर सेंटेंस की फॉर्मेशन ही ऐसे जा रही है कि इट्स टाइम यू वेंट आउट, आप बाहर जाओ एंड डैश योर ओन लिविंग। तो आप क्या करोगे अपनी लिविंग का? यू हैव टू अर्न योर ओन लिविंग, राइट? सो विद दिस वी हैव टू गो विद द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट वी हैव इज द एलिफेंट फेल इनटू डैश the hunters had said, track, trap, rick, trunk. So the elephant fell into the hunters had said.
हंटर्स ऑब्वियसली अगर कुछ सेट कर रहे हैं तो वो क्या सेट करेंगे? इफ हंटर्स आर सेटिंग समथिंग, इट इज टू ट्रैप द एलिफेंट। ठीक है, तो as you can see here, the word trap is considered here to trap the elephant in something. तो इस वजह से we will have to go with option B, that is trap. Why? Because आप अगर किसी चीज को ट्रैप करें, आप एलिफेंट के लिए आपको ट्रैप सजा रहे हैं, तो वो इसकी हंटर्स उसके लिए ट्रैप बिछा रहे हैं. That's why the elephant fell into the trap. Next we have is the dress isn't really tight. It will dash when you have worn it. द ड्रेस इजंट रियली टाइट, इसका ये मतलब है वो कह रहे हैं कि ड्रेस लूज है, ड्रेस इज लूज एंड इट विल डैश व्हेन यू वर्न इट. इसका मतलब आप उसको पहनोगे जब, व्हेन यू विल वेयर इट. ठीक है, तो हमारे पास है बेंड, एक्सपैंड, स्क्वीज, स्ट्रेच. तो सिंस यहाँ पे लिखा है द ड्रेस इजंट रियली टाइट, इट विल डैश व्हेन यू हैव वर्न इट. सो ये हमें यहाँ पे क्या फॉर्मेशन दे रहा है कि ड्रेस इजंट रियली टाइट, यानी कि जो ड्रेस है जो एक पर्टिकुलर इंसान ने पहनी है वो टाइट नहीं है. तो अब क्या होगा जब वो उसको बार बार पहनेंगे, वो ये होगा कि वो ड्रेस स्ट्रेच हो जाएगी. द ड्रेस विल स्ट्रेच. दैट इज दिस ऑप्शन डी. नेक्स्ट वी हैव इज विथ हिज बैक टू द ओल्ड मैन, he stood at the window, fists clenched, and his shoulders dashed with his choked sobbing. Shivered, shook, vibrated, moved. He stood at the window, fists clenched, and his shoulders dashed with his choked sobbing. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं with his back to the old man, एक आपको एक सिनेरियो दिया गया है जिसमें there is this old person, he stood at the window, someone was at the window. फिस्ट क्लेंच्ड का ये मतलब है मुट्ठी बंद करना ऐसे करके. दिस इज फिस्ट क्लेंच्ड. एंड हिज शोल्डर्स डैश विद हिज चोक्ड सोबिंग. चोक्ड सोबिंग का यहां मतलब है रोना. कोई रो रहा है और वो रुक रुक के रो रहा है. तो अब हमारे पास यहाँ ऑप्शंस क्या है? शिवर्ड, शुक, वाइब्रेटेड या मूव्ड. तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? अब यहाँ पे अगर आप शोल्डर्स को देखोगे, एंड हिज शोल्डर्स डैश विद हिज चोक्ड सोबिंग, तो वो क्या हो सकता है? अगर कोई इंसान रो रहा है तो वो रोएगा तो उसके शोल्डर्स को क्या होगा? ऑब्वियसली इट विल मूव, इट विल बी इन अ शेप ऑफ यू कैन से शॉक. तो इस वजह से वी हैव टू गो विद द ऑप्शन बी, दैट इज शुक. क्योंकि शुक का मतलब होता है टू मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्पेस. ठीक है, जैसे शिवर्ड का मतलब तो आपका हो गया ठिठुरना यानी ठंड लगना. आपका वाइब्रेटेड का मतलब होता है कांपना. मूव्ड का मतलब होता है अपनी जगह से. शुक होता है एक झटके से, झटका. या फिर आप इसको ऐसे भी आ सकते हैं, एक हल्का सा ऐसे शुक, ऐसे आपको कोई जैसे करंट लगता है ना, एक शुक लगता है, तो दैट इज दिस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज शुक. नेक्स्ट वी हैव इज द bereaved mother proudly received the gallantry award dash her brave son who had laid down his life in the recent war, in the name of, in lieu of, on behalf of, for the sake of. ठीक है, तो यहां पे बात हो रही है अबाउट अ सोल्जर who martyred in war. ठीक है, तो एक सोल्जर है जिनकी बात हो रही है जो जंग में शहीद हो चुके हैं. ऑन हिज बिहाफ हिज मदर इज गोइंग टू टेक हिज अवार्ड. तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम डैश में क्या फिल करेंगे? इज इट इन द नेम ऑफ, इन ल्यू ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, फॉर द सेक ऑफ? जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी जगह पे उनकी मदर को अवार्ड दिया जाएगा, तो वो क्या हो सकता है? वो ऑन बिहाफ ऑफ हो सकता है. कैसे हो सकता है? ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है at someone's place. ठीक है, so the correct option is option C, on behalf of.
नेक्स्ट वी हैव इज वी, तो इसमें हमारा क्वेश्चन का थोड़ा फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। यहाँ पे हमें ऑप्शन में अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स को देखना पड़ेगा। तो हियर वी हैव इज शी ऑलवेज ऑर्गेनाइजेस लैविश पार्टीज ऑन बर्थडेज। फ्रूगल, डिसेंट, चीप या स्ट्रेंज। लैविश का मतलब होता है विच इज एक्सपेंसिव। आप कई बार बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, बहुत सारे होटल्स में जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव दिखते हैं, बहुत ज्यादा रॉयल दिखते हैं, तो उनको हम लैविश बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हमको क्या करेक्ट ऑप्शन रखना चाहिए? क्या हमें फ्रूगल के साथ जाना चाहिए, क्या हमें डिसेंट के साथ जाना, या हमें चीप के साथ, या फिर हमें स्ट्रेंज के साथ जाना चाहिए? वेल, बहुत लोगों का लगेगा कि इसका ऑप्शन चीप हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका ऑप्शन फ्रूगल होगा। वाई फ्रूगल? फ्रूगल का ये मतलब होता है समथिंग which is economically sound। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कोई ऐसी चीज जो बजटेड वे में हो सकती है, ना कि लैविश चीजों की तरह जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है और बहुत कम लोग उसको अफोर्ड कर पाते हैं। तो इसीलिए इसका डायरेक्ट अपोजिट जो हमारे मीनिंग के साथ बैठता है, दैट इज फ्रूगल। लैविश का अपोजिट फ्रूगल, सो द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट वी हैव इज द सोल्जर वाज ग्रेटली प्रेज्ड फॉर हिज वैलर। इसका अपोजिट क्या होगा? क्लमजीनेस, कॉवर्डिस, सेल्फिशनेस, टैक्टलेसनेस। वैलर का मतलब होता है ब्रेवरी, बहादुरी। ठीक है, तो ब्रेवरी का डायरेक्ट अपोजिट क्या हो सकता है? डरना। कोई इंसान, एक होता है ब्रेव, एक होता है कावर्ड। तो ब्रेव का अपोजिट, जब आपका अपोजिट इज कावर्ड, सो दिस गिव्स यू एक हिंट कि यहां पे हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज कॉवर्डिस। वैलर का मतलब होता है ब्रेवरी, ब्रेव का अपोजिट होता है कावर्ड, और उसी हिसाब से कनेक्टिंग ऑल द पॉइंट्स, द करेक्ट ऑप्शन इज कॉवर्डिस। नेक्स्ट वी हैव इज दीज रीजन्स आर वेरी फर्टाइल। अब फर्टाइल का क्या मतलब है? जो उपजाऊ जमीन होती है, या फिर ऐसी चीज, अ प्लेस वेयर थिंग्स कैन ग्रो। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है। अब यहां पे हमारे पास इसके ऑप्शंस क्या है? स्टेराइल, एरिड, बैरन, प्रोडक्टिव। ठीक है, तो यहां पे इसका ऑप्शन हो सकता है बैरन। बैरन का क्योंकि मतलब होता है अ प्लेस वेयर थिंग्स कैन नॉट ग्रो। ऐसे कई बार होता है कि आप देखते हैं बहुत सारी जमीन होती है जिनके ऊपर कोई खेती नहीं करता है या कोई फार्मिंग नहीं करता है, एंड द रीजन इज बिकॉज दोज lands are barren, वहां पे fertile soil नहीं है। Anyways, this was the concept, so the correct option is option C, that is barren। ठीक है, so the next question that we have is some sick immigrants were detained at the airport। ठीक है, तो immigrant का क्या मतलब होता है? immigrant का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान who is coming to live in a country from another country। ठीक है, a person coming to a country from another country। ठीक है, तो इसका हमारा डायरेक्ट अपोजिट क्या हो सकता है? सेटलर्स, नेटिव्स, वैगाबॉन्ड्स, फॉरेनर्स। तो फॉरेनर्स तो ऑब्वियसली नहीं होगा, सेटलर्स भी नहीं होगा, वैगाबॉन्ड्स भी नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन हो सकता है? इसका ऑप्शन हो सकता है नेटिव्स, ऑप्शन बी, नेटिव्स। क्यों? क्योंकि नेटिव्स वो लोग होते हैं जो बिलोंग करते हैं। अगर आप इंडियन सिटीजन है, मैं इंडियन सिटीजन हूं, मैं इंडिया में रहता हूं, तो आई एम अ नेटिव। तो समवन who belongs to that country। Next we have is the questions were so elementary that anyone could pass the test। इसका अपोजिट क्या होगा? अनयूजुअल, प्राइमरी, नाइव, एडवांस्ड। ठीक है, तो एलिमेंट्री का क्या मतलब होता है? समथिंग विच इज बेसिक। जैसे आप लोग सुनते हैं कई बार, हम स्कूल्स में बोलते हैं कि बच्चे अभी एलिमेंट्री स्कूल में हैं, ठीक है, फिर वो हायर सेकेंडरी में जाएंगे एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो क्यों बोलते हैं? बिकॉज एलिमेंट्री इज समथिंग विच इज बेसिक। ठीक है, विच इज देयर टू सेटल अ न्यूट्रल बाउंड्री
विच इज नॉट हाईली एडवांस, विच इज नॉट इंटरमीडिएट, वो ऐसी पोजीशन होती है जो कि बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होती है। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन हो सकता है एडवांस्ड। क्यों? क्योंकि एडवांस्ड यानी समथिंग विच इज एट हाई लेवल। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट अपोजिट बेसिक का एडवांस्ड होगा, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट वी हैव इज, हमें अब यहां पे नियरेस्ट मीनिंग ढूंढने हैं इन पर्टिकुलर अंडरलाइंड वर्ड्स का। टुडे द न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ कार्नेज एंड वायलेंस। इसका ऑप्शन हमारे पास जो है वो है ब्लडशेड, लस्ट, कंसर्न, सटायर। तो बेसिकली यहां पे हमें कार्नेज का नियरेस्ट मीनिंग ढूंढना है। तो कार्नेज का क्या मतलब होता है? कार्नेज का ये मतलब होता है किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज कार्नेज। और अब यहां पे हमारा उसके साथ नियरेस्ट क्या बैठ सकता है? क्या वो ब्लडशेड है, लस्ट है, कंसर्न है, सटायर है? तो क्या हो सकता है? इट कुड बी ब्लडशेड। ब्लडशेड का मतलब होता है खून खराबा, यानी कि किलिंग ऑफ पीपल। आप कई बार सुनते हैं वॉर्स में कुछ ऐसे लोग टर्म्स यूज करते हैं कि ब्लडशेड हो गया। तो ब्लडशेड का क्या मतलब होता है? ब्लडशेड का ये मतलब होता है कि खून खराबा हो गया। सो द करेक्ट चॉइस हियर इज ब्लडशेड, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट वी हैव इज दिस रिलीजियस गिफ्ट दैट मेक्स मैन ह्यूमन इज स्टिल अलाइव इन इंडियन सोल्स। सो हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन है दैट इज मिस्टिकल, स्पिरिचुअल, मेटाफिजिकल, फिलोसॉफिकल। तो यहाँ पे रिलीजियस का क्या मतलब होता है? बिलीविंग इन अ रिलीजन। जैसे हम लोग किसी ना किसी चीज में बिलीव करते हैं, किसी ना किसी सिद्धांतों में बिलीव करते हैं, वैसे ही रिलीजियस का मतलब होता है बिलीविंग इन अ रिलीजन। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट नियरेस्ट मीनिंग किसके साथ बैठ सकता है? क्या वो मिस्टिकल के साथ बैठ सकता है? क्या वो स्पिरिचुअल के साथ बैठ सकता है? मेटाफिजिकल या फिलोसॉफिकल? सिंस रिलीजन इज समहाउ और द अदर वे कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, तो यहां पे द करेक्ट ऑप्शन दैट वी गो विथ is option B, that is spiritual. Okay, next we have is, it is difficult for us to imagine how much this safety means to everyone. Feel, understand, think, see. Imagine का तो मतलब होता है सोचना, imagine करना, सोचना, ठीक है, to think about something, ठीक है। तो इसका क्या नियरेस्ट मीनिंग हो सकता है? फील, अंडरस्टैंड, थिंक, सी में इसका मीनिंग हो सकता है नियरेस्ट, दैट इज थिंक। नेक्स्ट वी हैव इज, public service is not merely something that occupies the hours you are doing it, but invades all your life and experience and affects them in one way or the other way. Invades का क्या मतलब होता है? Invades का मतलब होता है कब्जा करना किसी चीज के ऊपर, to cover something, यानी किसी चीज के ऊपर वो करना। आप देखते हैं पुराने टाइम में कई बार वॉर्स होती थी, तो कंट्रीज, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक करके क्या करती थी? इन्वेड करती थी। वही इन्वेड का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर कब्जा करना। तो यहाँ पे हमारा नियरेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? हमारे पास ऑप्शन है प्रिजर्व्स, डिमोलिशेस, कवर्स, स्पॉइल्स। एज आई सेड, टू कवर समथिंग is the meaning of invade, so we have to go with option C, that is covers. Next we have is, he was the early part of the 20th century a staunch nationalist of the liberal fold. इसका हमारे पास मीनिंग्स है प्रोफ्यूज, डॉगमेटिक, प्लेंटिफुल, टॉलरेंट। लिबरल का बेसिक मतलब ये होता है समवन हु इज एक्सेप्टेंट टू ऑल द आइडियोलॉजी, समवन हु इज विलिंग टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, विलिंग टू एक्सेप्ट ऑल आइडियोलॉजीज। ना इनका टिल्ट किसी एक तरफ होता है ना दूसरी तरफ होता है, ये लोग मिडल में बिलीव करते हैं और ये हर चीज को एक्सेप्ट करने में बिलीव रखते हैं। तो इसका मतलब एक क्या हुए? इसका ये मतलब कि इन्हें सहना आता है। और सहने का इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन हो सकता है? सहने का मतलब टॉलरेंस, इनको टॉलरेट करना आता है। तो इसलिए वी हैव टू गो विद ऑप्शन डी, दैट इज टॉलरेंट। नेक्स्ट वी हैव इज, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा इनमें चेंज मिलेगा। यहाँ पे find out whether there is any error in any underlined part and indicate your response in the answer sheet. Okay, so now we have is, neither the servants nor the clerk
has done this. Neither the servants nor the clerk has done this. तो इसमें right now we cannot find any error. The word formation is good. Word formation ठीक है. Word formation ठीक है. Preposition ठीक है. और यहाँ पे वॉवल्स का तो यूज हुआ नहीं, अगर हुआ भी होगा तो यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा एरर दिख नहीं रहा है. तो सिंस देयर इज नो एरर हियर, तो हियर वी हैव टू गो विद ऑप्शन डी, दैट इज नो एरर. नेक्स्ट वी हैव इज द कार विच went past us when we were driving on the highway must have been doing at least 100 miles an hour. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं the car which went past us, ये बिल्कुल ठीक है. When we were driving on the highway, ठीक है. Must have been doing at least 100 miles an hour. अब यहाँ पे गलती शायद हो सकती थी लेकिन वो नहीं हुई. जैसे यहाँ पे अगर A होता तो ये पूरी तरह से गलत होता, बट सिंस यहाँ पे एन है तो इसका मतलब ये हमारे पूरे सेंटेंस को परफेक्ट बना देता है. तो इसका ये मतलब है कि वी हैव टू गो विद ऑप्शन डी, दैट इज नो एरर, बिकॉज देयर इज नो मिस्टेक हियर. And no mistake here. ठीक है. तो next moving forward we have is Raju will be back home in a year after his stay abroad. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, राजू विल बी बैक होम, इसमें कोई गलत सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं है. इन एन ईयर आफ्टर हिज स्टे अब्रॉड, आफ्टर हिज स्टे अब्रॉड तो ठीक है, पर ये जो इन एन ईयर है यहाँ पे क्या गलती हो गई है, यहाँ पे इन लोगों ने एन लगा दिया है. एंड सिंस ईयर सुनने में ई तो लगता है बट देयर इज नो साउंड ऑफ वॉवल, नो साउंड ऑफ वॉवल. तो सिंस यहाँ पे हमें वॉवल साउंड नहीं आ रहा है तो इस वजह से यहाँ पे ए लगना चाहिए था. शुड हैव बिन ए. ठीक है. तो वो नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो बी है वो गलत है. तो ऑप्शन बी यहाँ पे हम लेंगे बिकॉज इन अ ईयर आना चाहिए था. नेक्स्ट वी हैव इज आई हैव मच वर्क टू डू. I have much work to do. It's a very simple sentence formation and there is as such no error in this. So we have to go with option D, that is no error. Next we have is psychology did not develop into a science based of careful observation and experimentation until late 1800s. Psychology did not develop into a science, ठीक है. And experimentation until the late 1800s, ये भी ठीक है. Based of a careful observation, based off, तो based off का मतलब बहुत अलग होता है. based off का मतलब होता है, based off का मतलब होता है किसी चीज को belong करना या किसी चीज से belong करना. ठीक है, to belong. बट हम यहाँ पे किसी चीज को belong नहीं कर रहे, हम एक केयरफुल ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं. दैट मीन्स टू ऑब्जर्व समथिंग. ठीक है. तो यहां पे क्या होना चाहिए था, अगर यहां पे बेस्ड ऑन होता, बेस्ड ऑन जिसका मतलब होता है इसके ऊपर बेस्ड है, हमारे जो तथ्य है, हमारे फैक्ट्स है वो इस चीज के ऊपर है, इसलिए हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू अ साइंस बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन, देन इट वुड हैव बीन अ करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन. But it's not, it is based off, which is a wrong choice of words. So here option B is the correct choice, that it should have been based on.